Excuse me, sir. जी बेटा. Sir, please can you explain the example again? Definitely, why not? Wait for a minute. This is the PCM section, huh? Yes, sir. I take another example. So I just wanted to ask why we are adding like plus minus 0.1 and plus minus 0.3. Why we are not subtracting them? Reason. Because always you go for the maximum possible error. So if you suppose it is given first crime 0.1, second it is given 0.3. So when you go for the maximum, the maximum meant by either to you take only positive, so both should be positive, or both should be negative. This is the maximum, this is the limit of the error. When you say that this is the error, got it? So when you say, अब suppose result जो formulate हुआ, this I am removing from here, जो result obtain हुआ था, if you see plus minus delta x equal to plus minus delta a plus minus delta. So here there are the four methods to write down. Number one, plus delta x equal to plus delta a plus delta b. Delta x can be taken as plus delta a minus delta b. Delta x can be taken as minus delta a plus delta b. Delta x can be taken as minus delta a minus delta b. So these are the four. This is known as the limit. But always you go for the maximum possible error. This is maximum possible error. Got it? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. On the same theory, suppose मान लीजिए अगर ऐसा कोई डिफरेंस में होगा NOPE में errors in difference. So suppose a quantity is x made of the difference of the two. A में error plus minus delta A, B में error plus minus delta B. Suppose तो x में error plus minus delta x. A का error हो जाएगा A plus minus delta minus B plus minus delta B. This is x plus minus delta x equal to A minus B plus minus delta A, and here because this minus is going inside the bracket, so positive wala negative wala positive आएगा. But you see, once you are adding another, you are subtracting, the method is remaining same. Whether you write plus minus delta A or you write plus minus delta B, बात एक ही है. So this is cancelled. Got it? So your result will be left the same thing, plus minus delta A plus minus delta B. Got it? Got it? Is this clear? इसका अगर मैं क्वेश्चन So Yes, here also we will add them. Yeah, definitely. Because you see the method is this only. Now suppose Sir, I is say it? you, wait for a minute. I am writing the something. ठीक है? You guess it. The temperature
of water is increased from 10 plus minus 0.1 degrees Celsius to 15 plus minus 0.2 degrees Celsius. Find out rise in temperature in limits of error. Got it? Do you understand the meaning of the question? The meaning of the question is clear? Anand, Anjali, Anshika, Aryan. Yes, sir. What is said? This Yes, is the sir. initial temperature. This is the final temperature. And whenever you are asked to calculate the rise, so rise means final temperature minus initial temperature. So what you will be saying, initial temperature suppose this is theta 1 plus minus delta theta. मैंने temperature को theta से represent कर लिया. This is 10 point, how much it is given? 10 plus minus 0.1 degrees Celsius. Final temperature how much? 15 plus minus how much? 0.2. Okay, or rise in temperature. So this is theta 2 minus theta 1. So 15 minus 10. This is 5 degrees Celsius. Limits of error. ऐसा थोड़ी है कि जब इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारे एरर करने का स्कोप कम हो गया ना. एरर तो आपका मिस्टेक है. प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2. तो स्कोप ऑफ एरर इज प्लस माइनस 0.3. So rise in temperature in limits of error is how much? 5 plus minus 0.3 degrees Celsius. Is this clear? Is this clear? Check it. Yes, Yes, sir. sir. If you wish to write it down, you may. First you write down the question and then the solution so that I can continue. So please show the question. Okay. May I continue? Have you noted down? So one minute.
Excuse me, sir. जी बेटा. Sir, is there any condition in which we will subtract the error? No. I said you are finding the maximum possible error. You see, आपने पहला टेम्परेचर सपोज कीजिए मेजर किया 10.10 प्लस माइनस 0.1. ये जो एरर है ना सर, ये आपका एरर है. ये 10.02 ये भी एरर इंस्ट्रूमेंट का है या आपका है. अब आप इसे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ना तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हटा, केवल राइटिंग कर देने से इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 0.1 का एरर किया, सेकंड ऑब्जर्वेशन में 0.2 का एरर किया. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका स्कोप ऑफ एरर कम थोड़ी हो जाएगा, बल्कि स्कोप ऑफ एरर तो बढ़ गया. आपने टोटल एरर कितना किया? आपने टोटल एरर किया 0.3 का. गॉट इट? इसीलिए एरर इज ऑलवेज एडेड. Is this clear to all? Yes, sir. All of you have noted down? Yes, sir. May I continue? Yes, sir. Now you see, first was the error in addition. Then the error in subtraction was taken in the note. Now error in multiplication. Error in product. Let a physical quantity is made of product of two different physical quantities. Example, force equal to mass into acceleration. मैंने मास को जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल गई, फोर्स. जैसे एग्जांपल के तौर पर एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. एक बार मैंने लेंथ को मेजर किया सीधा सीधा, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में मेजर किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एक नई क्वांटिटी मिल गई, एरिया. ठीक, आपने पढ़ा था लास्ट ईयर V इक्वल टू IR. मैंने करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस. तो एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से प्रोडक्ट हुआ तो तीसरी क्वांटिटी मिल गई. गॉट इट? अब मैं किसी एक में एरर करूं, दूसरे में एरर करूं, तो मुझे ऑब्वियस है रिजल्ट भी एररफुल होगा. जी, गॉट इट? क्लियर? क्लियर? Yes. सो मान लीजिए इफ let the quantities are A and B. So physical quantity X, it is equal to the product of the two. Equation number 1. If error in A is plus minus delta A and error in B is plus minus delta B, so error in X will be plus minus delta X. Hence, X plus minus delta X equal to A plus minus delta A into B plus minus delta A. Now you see how to simplify. So do one thing, take X common from here. Yes, Sharma, raise hand. Yes, beta.
No, sir, by mistake. Okay. Take A common from here. Take B common from here. You see the product of A and B is equal to X. So when I say X, 1 plus minus delta X upon X, AB, अब एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों ब्रैकेट को, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई टू डेल्टा A अपॉन A, this is multiplied to plus minus delta B upon B plus minus delta A upon A into delta B upon B. Got it? This is taken as X, so this is cancelling here. Clear? So you are left with 1 plus minus delta X upon X equal to, and the result of the product, these are the 4 steps. This is 1 plus minus delta A upon A plus minus delta B upon B plus minus delta A upon A into delta B upon A. So this is cancelled. And now you see what I am saying you, delta A upon A. If you remember, this is a very small quantity. Here, delta A upon A is a small quantity. Delta B upon B is also a small quantity. So, delta A upon A into delta B upon B, if you multiply these two, will be very small quantity. So, delta A upon A into delta B upon B taken as 0. इसको मैंने 0 कर दिया. So this will be not written. So your final result, delta X upon X equal to plus minus delta A upon A plus minus delta B upon A. My dear, this is clear. Once again you check what I said. Once you go through that a physical quantity is made of the product of the two different physical quantities. If the physical quantities are A and B, then X equal to A into B. If the measurement error is plus minus delta A in A, measurement error in the B is plus minus delta B. तो obvious है X में भी error आ जाएगा तो X का error दिया. If you write in the complete combination, then X plus minus delta X equal to A plus minus delta A into B plus minus delta B. Do one thing, take X common from here, A common from this bracket, B common from this bracket. If you see, this is A into B, so A into B is always A. It is equal to X, so this is cancelled. Then after, you said because the delta A upon A, delta B upon B, these are the two small quantities, so the product of these two will be very small. That's why this function is neglected. So you are left with this result. And you can see this is a relative error, है ना? ये relative error हो गया. Last में जो आप बना रहे थे वो absolute बनना था, अब बन गया relative error. If you wish to write it down, please write down. This is your page number 3, and this is your page number 4. You wish to write it down? Yes. Please note कर लीजिए.
Done? Yes. Done? Yes, sir. Please see. Done? Shruti, is this clear, beta? Yes, sir. Have you noted down? Yes, sir. Okay. May I go for the another? All of you have noted? This much is sufficient. Should I get the one numerical based on it? You take your time to understand it completely. So I'm giving you the one numerical based on this theory. Try to get that.
नोट कीजिए क्वेश्चन। ये कहता है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10.2, 10 plus minus 0.2 kg, and when a force is applied on it, then the acceleration was found 2 plus minus 0.1 meter per second square. Find out the force acting on the object in the limits of the error. Please try. What should be the force? 20. Unit? Newton. Whenever you express your answer, na, give unit only. 20 Newton. Now you see the scope of your limit of error क्या होता है? तो अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला बनाता हूं तो पहले आप ये देखो मुझे जरूरत क्या पड़ेगी, F इक्वल टू m इंटू ए। अब इसमें जरूरत क्या पड़ रही है, प्लस माइनस डेल्टा F अपॉन F इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा m अपॉन m प्लस माइनस डेल्टा E अपॉन E। Got it? Clear? Is this clear? ठीक। अगर मुझे जो कैलकुलेट करना है, पता है वो क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स इन द लिमिट ऑफ द एरर्स, तो ये जाएगा F प्लस माइनस डेल्टा F कैलकुलेट करना है सर मुझे। तो F तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन डेल्टा F नहीं है मेरे पास, तो मैंने डेल्टा F के लिए ये फॉर्मूला यूज किया। ये ठीक है, गॉट इट। अब यहां से डेल्टा F कैसे आएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा F इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा m अपॉन m प्लस माइनस डेल्टा E अपॉन A into F. Got it? So what will be the answer? वो sorry, plus minus delta F. This is plus minus the value of the delta m. Delta m is 0.2, m is 10. Plus minus the delta A is 0.1, this is 2. And here it is written 20. तो या तो आप इसे यहीं पे सॉल्व कर लो, नहीं तो काम करो 20 को अंदर मल्टीप्लाई करो। प्लस माइनस 0.1 into 20 upon. Am I clear in my words? 0 से 0 गया, ये पॉइंट से ये 0 गया, ये 2 से ये 2। How much you are having here? Plus minus 0.4 plus 1. It means plus minus 1.4. Is this clear? Is this clear? Is this clear? Yes, sir. तो F प्लस माइनस डेल्टा F इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1.4 न्यूटन। अब मान लीजिए आप ऐसे नहीं देना चाहते हो, क्योंकि लिमिट ऑफ एरर का मतलब सम टाइम ना पीपल दे कैलकुलेट परसेंटेज एरर, तो आप इसका परसेंटेज एरर बनाना चाहें तो परसेंटेज एरर बना लीजिए। ठीक, तो अगर मुझसे कहा जाता है कि प्लस माइनस डेल्टा F अपॉन F
इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा m अपॉन n प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ये रिलेटिव है, तो परसेंटेज क्या होगा? देख सकते हैं, तो प्लस माइनस आप कितना है 0.2 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस माइनस 0.1 अपॉन 2 इंटू 100। तो ये ठीक है, यहां से इसे हटाया, ये कैंसिल हो गया, यहां से इसे हटाया 0, ये 5 हो गया। हाउ मच इज लेफ्ट? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 यानी कि प्लस माइनस 7, और ये क्या बन गया? परसेंट। तो या तो आप आंसर ऐसे लिखोगे, नहीं तो यहाँ पे आंसर प्लस माइनस डेल्टा एफ, आप आंसर ये भी लिख सकते हो 20 प्लस माइनस 7%। बोथ द आंसर, लेकिन डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट आफ्टर। इज दिस क्लियर? इफ एनीवन हैज टू राइट इट डाउन, प्लीज गो अहेड। Is this clear? आर्यन, अविका, क्षितिज, रियल, प्रियांश, ऋषभ, रितेश, रिया, शक्ति, यश, अंजलि, अंशिका, आर्यन। Yes, sir. Have you noted down? May I show the another page? Is this clear to all? Yes, sir.